हॅलो हॅलो रे मी लोक त्यांना भेटायचा प्रयत्न करू आणि नंतर जे काय असेल त्याच्या म्हणजे जे काय असेल अधिकृतपणे आम्हीच तुम्हाला सांगू. हे स्पेक्युलेशन करण्याचा काय अर्थ नाही आहे. मीटिंगच्या काय असेल तर अधिकृत मीटिंग असेल तर आम्हीच तुम्हाला सूचना करू की आज आम्ही मीटिंग बोलावली आहे, अमुक अमुकांना बोलावलेलं आहे. बूम घे ना माझा. पाणी गिरा ना. बोलत आहे. हो राजे तोपर्यंत ही घ्या ना. ही कुठली बाजूला बघा कोणाची लेफ्टला तुमच्या खाली लेफ्ट खाली ही कोणाची केबल सकट केबल सकट केबल सकट दो अन्ना खींचो जल्दी.
माझी आहे ही चालू आहे. हा नाही ना म्हणून तर ती लावली ना. ठीक आहे. फ्रेममध्ये येतो फ्रेममध्ये येतो. खूप प्रयत्न केला सर निघतच नाही. आता ते फोन मला माझ्या जीवन उचलायला लावून लगेच. माझ्याचं काय इश्यू झाला यार. हां $20,000 का केबल है ये. हाँ क्या मालूम यार क्या हुआ. वो हात वरती नका करू. नाही रे, इथूनच केबल खेचली गेली आहे वाटते. सगळ्या केबल ह्या लोकांनी खेचल्या आहेत. हो रे. हाँ राहू दे हाँ बरोबर है. ओके डन. अरे फिर भी नहीं आ रहा है. करून बघ ना. आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जाती तो आप कितने तैयार. देखिए कोई भी देखो, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि पार्टी में पवार साहब के साथ शुरुआत से मैं काम करते आ रहा हूं. मेरे जैसे अनेक मान्यवर काम कर रहे हैं और पवार साहब ने जो जो जिम्मेदारी हमको जब जब दी हम सब लोगों ने उसको निभाई है. लेकिन जहां तक ये जिम्मेदारी की बात आ रही है, अभी जब तक हमने पवार साहब के इस्तीफे के बारे में अंतिम निर्णय नहीं होता है तो नई जगह किसके लिए खाली होती है वो प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा है. और मैं व्यक्तिगत मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूं. मैं ऑलरेडी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और ये पद मेरे लिए मैं समझता हूं कि बहुत गौरवशाली है. बहुत कुछ उसमें मेरे पास जिम्मेदारी पहले से ही नेशनल लेवल पे पवार साहब के साथ काम करते हुए मुझे मिली हुई है. मैं पार्टी का पहले नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, अब पार्टी का मैं प्रथम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना हूं. तो इसलिए मुझे मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि अध्यक्ष बनूं. लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम जो भी पवार साहब के फैसला पहले क्या होता है उसके बाद ही ये अगले फैसले की बात हम करेंगे. अगर आई परिस्थिति मिस्टर शरद पवार इज right now, though he may have announced that I am resigning,
he still remains the president till a new president is appointed. We only hope and pray that he may not continue with this resignation. That is why these 2-3 days we have sought, and he has also sought to talk to us. Let us hope, let us see that everything good prevails. After that, if situation so arises, we will see, but I am not a contender. पिछले 2 दिनों में क्या इस तरह की चर्चा हुई है? पवार साहब ने जो डिसीजन लिया है, सर पवार साहब ने जो डिसीजन लिया है, आपको लगता है कि पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल एक वाक्यता है, सभी एक संघ है। कोई पार्टी में अलग ग्रुप, फूट फाट, ये सब बातें केवल स्पेक्यूलेटिव मीडिया में हम रोज पढ़ते हैं। पार्टी एक संघ है, पवार साहब के नेतृत्व में सभी लोग एक हैं और आगे भी पार्टी एनसीपी एज ए पार्टी एक रहेगी, एकजुट रहेगी। उसमें कोई बिखराव या कोई फूट आने वाली नहीं है। ये मैं आपको अधिकृत स्पष्टता यहाँ रहते हैं। ऐसे में अगर अपने निर्णय पे बने रहते हैं तो पार्टी में किसी एक के नाम को लेकर कंसेंसस बन सकेगा बिना किसी डिफरेंस के? मैं आपको गारंटी के साथ 100% कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में पवार साहब के मामले में या सक्सेसर के मामले में कोई दो राय नहीं होगी। जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल सर्वानुमते होगा और सबको पसंद आए ऐसा ही फैसला, अगर वो परिस्थिति आई तो होगा। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि वो अन्य विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पार्टी की लाइन तो करेंगे या नहीं उसके बारे में शंका उपस्थित की जा रही है। शरद पवार साहब पार्टी के सर्वा सुप्रीमो आज है और हमेशा रहेंगे। पद केवल एक परिभाषा होती है। पार्टी की आत्मा, पार्टी का दिल, पार्टी की जान, पार्टी की पहचान ये शरद पवार ही है और शरद पवार ही रहेंगे। और उनका मार्गदर्शन और उनकी सक्रियता पार्टी के कार्यों में आपको हमेशा नजर आएगी। क्योंकि आपने अपनी व्यक्तिगत बात कही कि आप तैयार नहीं हैं, यही बात जो है अजीत जी ने भी कही। ऐसे में क्या सुप्रिया के नाम तक आप तैयार होंगे? अभी जब वो प्रक्रिया के लिए मीटिंग में मैं बुलाऊंगा तब मैं आपको उसकी बात करूंगा। त्याला विचारू दे ना, एक नंतर तू विचार। 2 दिवसांपासून कार्यकर्ते आंदोलन करत आहे, उपोषण करत आहे। शरद पवार साहेबांनी त्यांना आतमध्ये बोलवलं होतं, समजून घालण्याचा प्रयत्न केला आहे। यानंतर पुढे असे आंदोलन होणार आहेत काही? असं आहे बघा, हे काय आंदोलन आम्ही काय घडवून आणलेलं नाही आहे। पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्तीने म्हणजे जे काही त्यांची भावना व्यक्त करण्याचं काम केलं आहे। आम्ही कसं त्यांना समजुती घालणं, त्यांना शांत करणं हे तर कर्तव्य आहे पवार साहेबांचंही आहे, आमच्या सर्वांचंही आहे। ते आम्ही करत आहोत। असं आहे की सर्वप्रथम जे आम्ही प्रयत्न करत आहोत ते 2 दिवस 3 दिवस आम्हाला जे मुदत पाहिजे ते होऊ द्या, नंतरच आपण हे सगळे चर्चा करत राहू। आज सगळ्या विषयावर तुम्ही जर तर आता करत राहिले तर आम्ही काय उत्तर देणार? नए अध्यक्ष के लिए जो कमेटी बनाई है, अगर वो कमेटी सर्वा तौर पर ये कह देती है कि प्रफुल्ल पटेल को हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे प्रफुल्ल पटेल? अभी देखिए, मैं सपने नहीं देखता हूँ मुंगेरी लाल के, और इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी होगा फैसला अच्छा ही होगा। पार्टी के सभी वरिष्ठों के अंतर्गत ही होगा, मगर पहले वो परिस्थिति, अभी वो मीटिंग बुलाने की आएगी या नहीं आएगी वो हम आपको कल बताएंगे। भवितव्याचा प्रश्न आहे, कारण वज्रमूठ सभाही पुढच्या रद्द केल्या जात आहेत, म्हणून ह्या निर्णयाचा परिणाम महाविकास आघाडीवरही दिसतोय का? मला एक स्पष्ट करायचं आहे, कारण ही चर्चा झाली होती आणि तुमची काही चॅनलमध्ये बातमी आम्ही पाहिली। वज्रमूठ सभा 1 तारखेची जी होती मुंबईला, त्याच दिवशी ह्या उन्हाळ्याच्या गरमीच्या तडाख्यामध्ये हे पुढची सभा थोडी टाळावी
किंवा पोस्टपोन करावी अशी सगळ्या नेत्यांमध्ये त्या स्टेजवरच चर्चा झाली होती आणि त्याच्या आणि कालच्या पवार साहेबांच्या राजीनामाच्या कुठलाही म्हणजे संबंध येत नाही. वज्रमूठ सभा किंवा महाविकास आघाडीची चर्चा आम्ही इथे करायला बसलेलो नाही. हे जे काही घडलं आहे ते कालची गोष्ट आहे. जे तुम्ही म्हणतात ते परवा ऑलरेडी चर्चा होऊन निर्णय झालेला होता. सर, आपने कहा की कोई ऐसा नाम चुना जाएगा. देशातील अनेक नेत्यांची चर्चा सुरू झाली असेल तर देश पातळीवर याचा इम्पॅक्ट काय लागतो, काय चर्चा त्या संदर्भात असं आहे. पहिला आम्हालाच तरी ॲब्झॉर्ब करू द्या ना. पहिलं आम्हाला पण म्हणजे ते आत जरा हे डायजेस्ट जो पचवू द्या की हे जे पवार साहेब म्हणले हे आम्हाला मान्य आहे की नाही ते आम्ही आमच्या प्रयत्न त्यांच्या समजुतीचा चालू केला. It's been 24 hours, more than 24 hours since Sharad Pawar has declared his decision. What is the future course of action going to be? Is any meeting going to be called in the coming 1 or 2 days? Is the committee deciding on meeting by itself and deciding the future course of action? So what are the What next is the steps? next step? 3 steps, the next. See, very clearly I would like to say that Mr. Pawar resigned yesterday all of a sudden in a course of his speech during his book launch. Now we were all caught by surprise, we were all shocked and we were of course dismayed and very sad. All happened suddenly and as a consequence of which you saw yesterday, couple of hours all of us tried our best to make sense of what was happening, was trying to plead with him, to convince him, and that was there for all to see. Now the issue is, we did manage to speak to him and he asked for a couple of days, let me think in my mind what I should do. So 2 days or 3 days means that was yesterday. Today at least I don't think we can ask such a big tall leader to immediately come and give us an answer to what our doubts are. The third thing is about having a new leader or whenever we have that process. I will be able to only tell you once the first decision is finalized. If the first decision is not yet finalized, how do we take the second step? The second step is only a consequence of the decision finally in the first step which has been taken. So we'll wait for that. And if at all there is a decision to be taken about the successor, I, as the senior most person in the committee, as the national vice president, will call a meeting in Mumbai in the next, whenever that time comes in the event of a final decision by Mr. Pawar, and that will be known to all of you. And of course, that meeting will be a meeting where many more people will be attending. You know the party in and out. Who is your personal favorite when we talk about the national party president? Is it Supriya Sule or Ajit Pawar for you? Now, why are we talking about the next president when the current president, we want him to continue? So it is Sharad Pawar. With all other things, all these things are speculative. Let us first cross the bridge, then we will see what next comes in. One question, please. How the national opposition parties are looking at this? Is there been any call from Sonia Gandhi ji, Uddhav Thackeray ji to Sharad Pawar? Any idea that you have? No, I don't know because all the time, 24 hours, I will not be able to know who's calling Mr. Pawar. But I'm sure a lot of senior leaders across the country have expressed their maybe their concerns directly to him or to some of our colleagues. So, well, that is expected. After all, Mr. Sharad Pawar is a very senior leader of the country. He is not just the president of NCP. He has his own stature, standing in the country. And it is but natural that people look up to him beyond the NCP and in the interest of a national agenda in this country. सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही. अगर आप नेक्स्ट सेकंड स्टेज पर ये डिसीजन लेते हैं नए प्रेसिडेंट का, तो उस प्रेसिडेंट के लिए नेशनल एक्सपीरियंस होना कितना मायने रखेगा? भाई साहब, हमारे पास वो प्रश्न के बहुत जवाब है, मगर हमारे पास वो जवाब देने के पहला जो प्रश्न है उसका फैसला होने के बाद ही हम दूसरी बात करेंगे. भाई, एक सवाल. थैंक यू.